Good evening and welcome to Breaking Views on NDTV. I am Ankit Tyagi. Ladies and gentlemen, the biggest political story today, of course, the breaking of another party, another opposition party, NCP. We have been talking about this for the last few days, but today it was personal. It was a show of strength from both the sides. Ajit Pawar on one hand meeting his supporters. Sharad Pawar, 83-year-old man, had called his supporters as well. But for the first time in this entire fight, it became bitter, it became personal. Ajit Pawar, when he was speaking to his supporters, said again and again, "You are 83 years old. It's time for you to rest. Let us take over. You made me the villain. You were playing those games." Directly attacking Sharad Pawar. Supriya Sule, daughter of Sharad Pawar, while she was responding to Mr. Ajit Pawar today, said, "Say anything you want to about me, but not my father." And then Sharad Pawar, the party patriarch, who till yesterday, even the rebel faction was saying is our leader, he came out and said, even you, the rebels, as far as Sharad Pawar is concerned, need my photograph. Show of strength, of course. Who has how many numbers? We'll talk all about that. But I want to start this evening of how politics now has seeped into the Pawar family. It's now a personal battle between the uncle and the nephew. Listen in. मित्रांनो आज स्वतः आपले वरिष्ठ नेते चव्हाण साहेबांच्या समाधीला गेले. ठीक आहे, चव्हाण साहेब आपल्या सगळ्यांचं दैवत आहे. माझ्याकडनं पण घोडचूस झाली होती. मी एक दिवस सकाळी 7 ते संध्याकाळी 8 पर्यंत तिथं न पाणी पिता न काही करता बसलेलो होतो. मला ते खूप मनाला लागलं होतं. परंतु मित्रांनो, काळ आता जर वय जास्त झालं, 82 झालं, 83 झालं, तुम्ही कधी थांबणार आहात का नाही? तुम्ही आशीर्वाद द्या ना. त्याच्या संदर्भामध्ये आम्हाला वाटतं तुम्ही शतायुष्य व्हावं. लोकांना आईस झालाय असं टीव्ही वाले म्हणतात. मी कधी आरोप करत नाही आणि मी कधी करणारही नाही. माझ्या वाचनात आणि ऐकण्यात आता आलं की काही लोकांचं म्हणणं आहे की काही लोकांचं वय झालंय, त्याच्यामुळे त्यांनी फक्त आशीर्वाद द्यावे. का बरं आशीर्वाद द्यावे? रतन टाटा साहेबांपेक्षा 3 वर्षांनी मोठे आहेत. आजही टाटा ग्रुप पोट तिरकीनी लढतात आणि सगळ्यात मोठा कुठला ग्रुप आहे आज देशात? टाटा ग्रुप आहे. रतन टाटांचं वय काय? 86. त्याच्यानंतर सिरम इन्स्टिट्यूट घेतलं का नाही इंजेक्शन? सायरस पुनावालाचं वय काय? 84. साहेबांचे आणि पाटील काकांचे वयाचे आहेत. एका वर्गात होते सगळे. किती? 84. त्याच्यानंतर अमिताभ बच्चन, किती वय? 82. आज कुठली जाहिरात लागताना सगळ्यात पॉप्युलर नाम कोण आहे? अमिताभ बच्चन. वय किती? 82. त्याच्यानंतर इंग्रजीवाल्यांना माहिती आहे वॉरेन बफेट. अरे सबसे देखो तो फारुख अब्दुल्ला साहेबांपेक्षा 3 वर्षांनी मोठे आहेत. मला मला विचारलं, अरे क्या हो रहा है एनसीपी में? आज काही लोकांनी भाषणे की माझ्याबद्दल काय बोलले, पण बोलताना एक सतत सांगत होते की आमचे गुरु आहेत. तुम्ही आज जर आमच्या काही मित्रांचं एक वेगळं काही बैठक झाली, मेळावा झाला, त्या सगळ्याच्या पाठीमागचे फोटो बघितले. त्या फोटोत सगळ्यात मोठा फोटो होता माझा. आज मुंबईमध्ये सुद्धा अनेक ठिकाणी पोस्टर लावली, त्याच्यात फोटो माझा. त्यांना माहिती आहे की आपलं नाणं चालणार नाही. त्यामुळे जे नाणं चालेल ते चालणारं नाणं घेतलं पाहिजे. कारण त्यांचं नाणं खरं नाही, खंड त्यांना वाजत नाही, हे नाही लोक ओळखतील. त्यामुळे नको की अडचण लावून टाकायच्या ठिकाणी फोटो दाखवा पाहिजे.
So the battle for who is the real NCP, who still has the control over the NCP, is it the people, those who have gone with Ajit Pawar, or does Sharad Pawar still has the stomach for another fight in his political career? Joining me at this moment, Mr. Anil Deshmukh. He was today present right next to Mr. Sharad Pawar, senior leader of the NCP, former minister as well. Deshmukh sahab, बहुत-बहुत shukriya. Thank you so much for joining us here on NDTV. I want to start by asking you, sir. सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं. आज अजीत पवार ने बोला कि आप 83 इयर्स के हो गए हैं, रुकेंगे कब? क्या जवाब है सर इसका? देखिए, इतने साल से शरद पवार साहब राजनीति कर रहे हैं. आज 83 साल के हो गए, 83 इयर्स के हो गए, लेकिन ये उम्र में शरद पवार साहब 18 घंटा काम करते हैं. पूरे महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र के बाहर घूमते रहते हैं. कई बार ट्रेन से, कई बार प्लेन से, कई बार बाय रोड ट्रैवल करते रहते हैं. उम्र उनकी हो गई है पवार साहब की, लेकिन ना शेर कभी बूढ़ा नहीं होता. आज भी पवार साहब ये उम्र में जिस हिसाब से काम करते हैं, पार्टी में सबसे ज़्यादा काम करने वाला कोई नेता होगा तो वो शरद पवार साहब है. और इस प्रकार का कि हम आपकी उम्र हो गई, और सुप्रिया ताई सुले ने सही कहा, 2-3 नाम उन्होंने लिए. रतन टाटा जी का नाम लिया, फारूक अब्दुल्ला जी का नाम लिया, अमिताभ बच्चन जी का नाम लिया, कि ये भी 82, 83, 85 की उम्र के होने के बावजूद भी आज भी काम करते हैं. तो पवार साहब की उम्र 82 हो गई, 82 हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने घर में बैठना चाहिए. देशमुख साहब, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि ये जिस तरीके से आज काफी पर्सनल लड़ाई दिखाई पड़ी. अजीत पवार ने कई बार कहा कि आपने मुझे विलन बनाया, बात करने के लिए आप मुझे भेज दिया. आपको लगता है इससे जो पॉलिटिकल लड़ाई है वो अब काफी पर्सनल भी हो गई है, उनके रिश्तों में अब दरार वैसे भी आ गई है? पहली बात तो आदरणीय शरद पवार साहब का जो हमारा अलग राष्ट्रवादी कांग्रेस का जो सम्मेलन हुआ, उसमें हमने किसी ने भी कोई पर्सनल बात नहीं की. क्योंकि ये जो लोग गए हैं, हमारे सीनियर लीडर थे, प्रफुल्ल भाई पटेल, छगन भुजबल साहब, अजित पवार साहब, हमारे से सीनियर लीडर थे, हमारे लीडर थे. हमने उनके साथ में 25-25, 30-30 साल काम किया है करके. हमारे जो सम्मेलन हुआ उसमें किसने भी पर्सनल अटैक नहीं किया. लेकिन आपके जरिए से जो मुझे मालूम पड़ रहा है अभी कि जिस प्रकार का पवार साहब के ऊपर बोला गया, आज मुझे बताइए, उम्र के बारे में बात करते हैं. आज उनका जो सम्मेलन हुआ प्रफुल्ल भाई पटेल और अजित पवार साहब का, जो स्टेज पे जो होर्डिंग लगा हुआ था पीछे में, उसमें पवार साहब का फोटो. मतलब पवार साहब की इधर उम्र होगी बोलते आप, और उधर पवार साहब के छवि के बिगर आपका चलता नहीं. जो पूरे मुंबई में आज होर्डिंग लगे हुए उन लोगों के, उसमें भी हर एक होर्डिंग पे पवार साहब का फोटो है. भाई, पवार साहब के बिना पवार साहब के उनकी पार्टी चल नहीं सकती, ये हकीकत है. लेकिन ये तो सीधा सीधा कह रहे हैं कि पार्टी तो पवार साहब की बची नहीं. 30 तारीख को, 2 तारीख को उन्होंने शपथ लिया, 30 तारीख को ही एक चिट्ठी इन्होंने इलेक्शन कमीशन को भेजा अजीत पवार कैंप ने, जिसमें उन्होंने कहा कि शरद पवार हमारे जो प्रेसिडेंट है, पार्टी प्रेसिडेंट भी नहीं है. एग्जीक्यूटिव ने तय कर लिया है दैट ही इज नो लॉन्गर द पार्टी प्रेसिडेंट. अजीत पवार अब पार्टी प्रेसिडेंट होंगे. कैसा है, आप पहले जो बीच में सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था उसकी पूरी जानकारी लीजिए. हमारे पार्टी के पास ही हमारा जो सिंबल है वो हमारे पार्टी के पास ही रहेंगे, और हमारी पार्टी भी हमारे आदरणीय शरद पवार साहब के पास में ही रहेंगी. ये जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है उसके हिसाब से पार्टी को, हमारे सिंबल को कोई भी तकलीफ नहीं, और हमारे पार्टी भी हमारे साथ में रहेंगी. हाँ, उनको अपने पार्टी के बारे में क्या करना है, या किससे मर्ज करना है, या दूसरी पार्टी फॉर्म करना है, उनकी सोच है. पर देशमुख साहब, आपको लगता है कि कहीं इस बार इतना ये दिनों से चर्चा चल रही थी, इस बार शायद आप लोग भांप नहीं पाए? क्योंकि 30 तारीख को वो चिट्ठी भेज देते हैं नेशनल एग्जीक्यूटिव की बिना बताए शरद पवार साहब को, वो कहते हैं कि हम उनको हटा दिया है प्रेसिडेंट के तौर पर. 2 तारीख को जब वो ओथ लेते हैं, उसके बाद 3 तारीख को आप लोग का एक्शन होता है. तो आपको लगता है कि इस बार कहीं आप लोग अनअवेयर थे, मतलब पता नहीं चल पाया, नाक के नीचे से वो पूरा खेल करके ले गए? ऐसी बिल्कुल बात नहीं है. पवार साहब को इसकी भनक लग गई थी कि कुछ तो भी इनकी मूवमेंट चालू है. विधायक लोगों की जब उन्होंने मीटिंग बुलाई थी, उसी टाइम मालूम पड़ गया था कि इनकी कुछ तो भी अलग दिशा में उनके बारे में अलग दिशा में जाने का सोच रहे. पवार साहब की इसकी भनक लग गई थी, और करके पवार साहब ने हमारे पार्टी के जो भी जिला के अध्यक्ष है, जो पदाधिकारी, उनसे बात किया.
आज आपने देखा होगा, आज जो हमारा सम्मेलन हुआ उसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट पार्टी के सभी ज़्यादा से ज़्यादा पदाधिकारी हमारे पार्टी के हमारे सम्मेलन में थे। हजारों की तादाद में हमारे सम्मेलन में हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हर एक डिस्ट्रिक्ट से और राज्य के बाहर से भी यहाँ पे आए थे जी। और आपको ये भी बात बताऊं, जब भी पवार साहब बाहर निकलेंगे और हर एक डिस्ट्रिक्ट का दौरा करेंगे तो उस टाइम जिस प्रकार का सपोर्ट पवार साहब को मिलेगा, आप देखना हर एक डिस्ट्रिक्ट में भीड़ उमड़ के आएंगी वहां पे बड़ी तादाद में। सर लेकिन हाल ही में कितने एमएलएज अभी आपके साथ हैं? आज 14 कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग 15 एमएलए कह रहे हैं, कितने एमएलएज अभी आपके साथ में हैं? क्योंकि अजीत पवार का फैक्शन कहता है 40 से ऊपर एमएलएज का सपोर्ट है उनके पास। एक बात समझ लीजिए, पहले अभी चुनाव को, असेंबली चुनाव को 10-11 महीना बाकी है। अभी एमएलएज का नंबर मायना नहीं रखता। अभी मायना रखता है कि आपके पास में कितने बड़ी तादाद में पार्टी के वर्कर हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक तालुका में। अभी तो चुनाव को सामने जाना है और उसमें मालूम पड़ेगा कि असली ताकत कौन से पार्टी की है। आप 2024 में देख लीजिए कि बड़ी तादाद में राष्ट्रवादी कांग्रेस जो पवार साहब के नेतृत्व में चलेगी या चल रही है, उसके ज्यादा से ज्यादा विधायक पूरे महाराष्ट्र में चुन के आएंगे और महाराष्ट्र के बाहर भी जो स्टेट में चुनाव लड़ेंगे वहां भी चुन के आएंगे। अनिल देशमुख साहब, ये आज शरद पवार साहब ने बात कही, ईडी के केसेस हैं कई नेताओं पर, जो इस वक्त अजीत पवार के ऊपर खुद भी ईडी के केसेस हैं, उनके ऊपर जांच भी चल रही है, केस आपके ऊपर भी था, तो क्या दबाव आपके ऊपर भी था पार्टी छोड़ के जाने का? अभी देखिए कि मेरे ऊपर जो था दबाव, आपको मैं बताऊं कि मुकेश अंबानी जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनके घर के सामने जिलेटिन रखा गया, बॉम्ब रखा गया। उसके बाद में जिसने जिलेटिन रखा था और जिसके गाड़ी में, जिसके स्कॉर्पियो में जिलेटिन रखा था, वो मनसुख हिरेन, उसकी भी हत्या हुई 8 दिन के बाद में। तो ये जिलेटिन रखने का, मुकेश अंबानी जी के घर के सामने का इंसिडेंस और 8 दिन के बाद मनसुख हिरेन की हत्या होने का इंसिडेंस, ये दोनों इंसिडेंट्स में मास्टरमाइंड जो थे, ये जिन्होंने करवाया था, आपको ताज्जुब लगेगा, इसके मास्टरमाइंड सही मायने में मुंबई के उस टाइम के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह थे। परमवीर सिंह ने पुलिस कमिश्नर होते हुए एक्सप्लोजिव रखा मुकेश अंबानी के घर के सामने। उनका पूरा जो मनसुख हिरेन की हत्या है, सब चीज के मास्टरमाइंड परमवीर थे। और ये जब इंसिडेंस हुआ, उस टाइम मैं होम मिनिस्टर था। मैं होम मिनिस्टर होने के नाते उनको मुंबई के सीपी पद से निकाल के उनको साइड पोस्ट में उनकी ट्रांसफर किया, उनको सस्पेंड किया। और उसको सस्पेंड करने के बाद में कुछ विरोधी पार्टी ने उनको पकड़ के मेरे ऊपर गलत इल्जाम लगाने लगाया, मेरे ऊपर 100 करोड़ का इल्जाम लगाया जी। लेकिन जब ये केस कोर्ट में चला, इसकी इंक्वायरी होके कोर्ट में चला, तो आपको मैं बताऊं कि जस्टिस चांदीवाल साहब के कोर्ट में परमवीर सिंह जो एक्स मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे, उनको बुलाया गया जी। जस्टिस चांदीवाल साहब के 6 समन्स उन्होंने भेजे, लेकिन परमवीर साहब आए नहीं। जब उनको पकड़ वारंट निकाला गया, तब उन्होंने अपने वकील के जरिए से जस्टिस चांदीवाल के कोर्ट में अपना एफिडेविट दाखिल किया। और वो एफिडेविट में उन्होंने लिखा, एफिडेविट में उन्होंने कबूल किया कि अनिल देशमुख के ऊपर जो मैंने आरोप किए, ये हियरसे के ऊपर है। और अनिल देशमुख के ऊपर मैंने जो आरोप किया, इसका मेरे पास कोई सबूत नहीं। इस प्रकार का एफिडेविट परमवीर सिंह ने, जिन्होंने मेरे ऊपर 100 करोड़ का आरोप लगाया था, उन्होंने लिख के दिया जस्टिस चांदीवाल के कोर्ट में। देशमुख साहब, मैं आपसे, और इस प्रकार का झूठा इल्जाम मेरे ऊपर मैं आपसे ये भी समझना चाहता हूं सर, झूठा इल्जाम लगा के मुझे, सर मैं आपसे ये भी समझना चाहता हूं, क्योंकि एनसीपी पार्टी के लिए अब ये एक बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई है। अजीत पवार ने आज ये कहा कि अगर शरद पवार जमीन पर जाएंगे, कार्यकर्ताओं के बीच में जाएंगे, रैली करेंगे, तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। कैसा है कि अभी आदरणीय या तुम्हारे प्रफुल्ल भाई पटेल हो या अजीत पवार साहब हो, उन्होंने अपना अलग गुट बनाया है। उनको तो पूरी आज़ादी है ना, हर एक डिस्ट्रिक्ट में जाके अपने पार्टी का, अपने सिंबल का प्रचार करने की। इसमें कोई रोक नहीं सकता उनको। अब पवार साहब, जब मैं बोल रहा हूँ, पवार साहब जब निकलेंगे तो किस प्रकार से सपोर्टर की भीड़ उमड़ के आएंगी, आप जरा आगे में देख लीजिए। सर, अंत में मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको लगता है कि इसका कुछ महाराष्ट्र की सरकार पे असर पड़ेगा? शिंदे साहब को थोड़ी परेशानी हो सकती है?
आपको पता है कि शिंदे साहब जो शिवसेना से बगावत करके बीजेपी के पास गए, जी। वो यही वजह देखे गए कि अजीत पवार साहब ने हमको सपोर्ट नहीं किया, हमको लेके नहीं चले, और अजीत पवार साहब की वजह से हम शिवसेना, जो उद्धव जी की शिवसेना छोड़ के हम बीजेपी के साथ जा रहे हैं। जी। अभी वही अजीत पवार साहब वहां पे चले गए तो एकनाथ शिंदे की क्या हालत होगी आप देख लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल देशमुख साहब हमसे जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। ही इज अ की मेंबर ऑफ द शरद पवार, if I can call it, the faction of the NCP at this moment, right next to Mr. Sharad Pawar. But just picking up from that last question that I asked him on the government and the stability of the government in Maharashtra, well, the numbers will tell you that there is not going to be any problem as far as the government of Maharashtra is concerned. But is there any unease as far as Mr. Shinde is concerned? Because in his camp, there is an important meeting which is going on. Now, sources are telling us that there is unease as far as the Shinde camp is concerned after Ajit Pawar has joined the government. The current total strength, and why is it, ladies and gentlemen, let me explain it to you. The current cabinet strength in Maharashtra is 43. So, total cabinet can be expanded up to 43 ministers, including the chief minister. BJP has 9 berths, Shiv Sena 9, and NCP, which is the latest entrant, has also 9 berths. 9 ministers from each party have taken oath. 16 slots are left to be shared. Will the NCP eat into the quota of the Shiv Sena led by Mr. Shinde is going to be the big question. Let me very quickly go across to my colleague Sohit, who is joining us at this moment on this broadcast. Sohit, thank you for being with us. I want to ask and understand from you, Tanushree also with us, what is happening as far as the Shinde camp is concerned. An important meeting going on. Do they feel that their leverage with Ajit Pawar coming into the game is now minimized? Absolutely, because earlier without Shinde there was no government in Maharashtra, but now since Ajit Pawar has joined, and Ajit Pawar is a very popular leader and much bigger leader if you talk about an NCP, and that has been a big catch for the BJP government. So the bargaining power is definitely reduced of Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde. And let me tell you that you asked that will NCP eat from the ministerial cabinet of Shiv Sena? Well, they already have, because the plan that was last year was that the cabinet will be shared only between 2 parties, that was the BJP and the Shiv Sena. NCP wasn't in picture, and a lot of promises were made by Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde to his own MLAs as well. And now these MLAs are asking questions. They are terrified as well, because now they have a lot of issues with NCP joining, because now they know that there will be more people over on the government side. They won't have the leverage that they currently have. And what does it also mean for Eknath Shinde? Because now even his bargaining power has reduced. Now, Ankit, remember there was a cold war going on recently between Eknath Shinde and Devendra Fadnavis on who is more popular, with Eknath Shinde even having newspaper ads like "Ab ki baar Shinde Sarkar" and also "Delhi mein Modi, Maharashtra mein Shinde." Similar to Delhi mein Narendra, Maharashtra mein Devendra. So he was almost projecting himself as the face of Maharashtra, and in all of that, the entry of Ajit Pawar has not only spoiled his own plans for the future, but also the plans that his MLAs had. And that's why, to keep everyone in the flock, now what is happening is Eknath Shinde is speaking to them and ensuring them that no, there are promises being made. In fact, when I spoke to the MLAs, they are saying that the Chief Minister has said that a new cabinet expansion will happen this week only. Okay. Will it happen, and will all the MLAs who have been promises have been made for them, will they actually get the seats over here? That is something we'll have to look after, because yes, there will be people who will be upset. Be it the Congress, I beg your pardon, NCP as well, because there are a lot of people who have come. Absolutely. In fact, BJP has 105, and even they have 9 cabinet ministers. That's right. So all of them would be hoping that they get larger share. A lot of people would be hoping that in the last 1 year to go for the assembly election, at least they get an opportunity to become the ministers. So thank you so much for joining us with all those details. Vijay Chorbone, senior journalist from Maharashtra, is joining us. Also, Mr. Jayant Manikar, a senior journalist, is also with us this evening. Mr. Manikar, I beg your pardon, sir. I want to start by asking you, how are you looking at this? First, the letter which has been sent by Mr. Ajit Pawar faction on 30th. This time, it seems that Mr. Ajit Pawar has learned the lessons. The mistakes that he made in 2019 are not being repeated this time.
Yeah, this time the script is written extremely properly. All the words are written perfectly, and even the mistake that forced him to come back within 80 hours has been rectified, with the documentary evidence being his side. And that time he walked away with some 53, but out of that 53, who was with him? Actually, that was the question. But this time he has got the letter of 40, and when the letter would be sent to Election Commission, one can understand what would be the offshoot with the BJP ruling at the center and the state. What will be the answer from the Election Commission as well as from the Speaker's chamber? Because Speaker's role will be always important. As what is claimed, as what we are getting the figures, some close to 32 or 33 legislatures are currently, they have attended Ajit Pawar's meeting, whereas Sharad Pawar's meeting, not more than 10 MLAs they attended. So obviously on the number side, Sharad Pawar is losing. One can say that grassroots, I was listening to what my friend Anil Deshmukh was saying. He was right that at the mass level, obviously Sharad Pawar will beat Ajit Pawar. But the point is this, one should not forget, though Supriya is saying at the age of 83, Yes. My father is working for 18 hours. But we should not forget, with the fragile health and with the age 83, there are limitations for even Sharad Pawar. But I want to even ask even Mr. Ajit Pawar also, because all the parties in India, even Yes. except BJP and communists, they are nothing but the family properties. He should have understood that what he wanted, he is not going to get it. I don't understand what Ajit Pawar has got by asking this question, because this is the same question what BJP is asking to all the dynastic ruled parties. Absolutely. This is the word. And it's not that Ajit Pawar has not come from the same family. He owes a lot of what he has been made on Yes. to Mr. Sharad Pawar. But Mr. Chormare, the question that I was asking my colleague Sohit, does this in any way, the coming together of the NCP with Mr. Ajit Pawar into the government, does it somewhere upset Mr. Eknath Shinde? सही है, एकनाथ शिंदे गुट तो अपसेट है ही, क्योंकि जो बर्थ मिनिस्ट्री में एकनाथ शिंदे गुट के एमएलए को मिलने चाहिए थे वो उन्हें नहीं मिल पाएंगे, उतनी संख्या में नहीं मिल पाएंगे, उनका शेयर उन्हें नहीं मिल पाएगा। और पिछले 1 साल हो गई एकनाथ शिंदे की सरकार सत्ता में आते हुए, फिर भी पहली बार जो स्वेरिंग सेरेमनी हुआ उसके बाद हर महीने कुछ ही दिनों में ये मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, कुछ ही दिनों में होगा, ऐसे बताया जा रहा है। मगर 1 साल के बाद ये मंत्री परिषद का विस्तार हो गया, मगर विस्तार होने के बाद उसमें जगह ली अजित पवार गुट के 9 एमएलए ने, अजित पवार सहित, और एकनाथ शिंदे गुट के जो एमएलए पिछले 1 साल से मंत्री पद की शपथ लेने के सपने देख रहे थे वो सब बाजू रह गए। और पिछले 3-4 दिनों से एकनाथ शिंदे के गुट में बहुत सारी खलबली मच रहे। कुछ एमएलए तो 2 दिन से ऐसी चर्चा है कि पीछे उद्धव ठाकरे के गुट में जाने की भी सोच रहे हैं। Very, very important what you're saying. But Mr. Mankar, in the end, I just want to ask from you and understand from you. We saw Supriya Sule today, in fact, when she responded to Ajit Pawar, she said, don't dare, attack my father. Whatever you have to say, you say about me. Does this also mean that Supriya Sule would also have to work extremely hard now? She's never been seen as a Maharashtra grassroots leader in comparison to Ajit Pawar. It's also a challenge for Supriya Sule to establish herself. Yeah, it's not exactly challenge, but she has to come on the roads, just considering her father's age and fragile health. What her father did or also her doing, she has to follow the same. She has to tour all the districts, and particularly she has to concentrate on all these 3.5 districts of Western Maharashtra, where NCP is dominant, and from where the chunk of 40 legislatures Ajit Pawar has walked away. She has to meet all the grassroots level workers, even though the legislature party may be with Ajit, but the workers who are the followers of Sharad Pawar, they are with me. This point she has to prove, then only it can go ahead. But still I feel, if at all, if Ajit Pawar succeeds, that's what feel that he will be definitely having 36 MLAs or whatever for the defection. I think the only option remains for
Sharad Pawar and Supriya Pawar is to go, in Marathi we call it as Swagruhi, that is to merge his party in Congress. That is the best option for the NCP. Okay. It is because actually Congress is also not having any female leader, and they will get one powerful female leader in Supriya Pawar as a chief ministerial candidate. And that's the idea. Even NCP brass, I mean remaining NCP brass, you can say, including Sharad Pawar. Right. He also must be mulling over it, and we can see another major development That will like be this. that will be very, very interesting. A very interesting thought, sir. We'll leave it there. Thank you so much, Mr. Manka, Mr. Chomare, for joining us and sharing your views on the broadcast. Very, very interesting what the senior journalist there was saying. And that is exactly, ladies and gentlemen, in this Game of Thrones seems to be the way. Eventually, it's the national parties which are gaining over the regional parties in Maharashtra, the Congress and the BJP. That's all the time that we have in this edition of Breaking News. News and updates continue on NDTV. Thank you. Good night.